Hello everyone, I am M.K. Mittal, your English teacher. Today we will see regarding the tense, a part of grammar. It is a very important topic for those who reads in tense is very important for writing and speaking also. In tense, we read about action or verb. In tense, we read about action or verb. And regarding the action or verb, we know its timing and nature of work and the timing of action. On the basis of timing, it has divided into three parts. As you know that time has been divided into three parts. First one is past, present and future. Like that, it is also divided into three parts. First one is past, second one present and third one future. On the basis of nature, that means वर्क कैसे हुआ है, इसको अगर ध्यान में रखकर और अगर उस एक्शन को, उस वर्क को अगर डिवाइड किया जाए तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी काम स्टार्ट हो जाता है. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ाने का काम क्या हुआ, शुरू हो गया. तो जो काम शुरू हो जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस. तो पहला हो जाएगा इसका कंटिन्यूअस. अब काम जब शुरू हुआ है तो समाप्त भी होगा. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कभी न कभी एंड करेगा. तो काम जब समाप्त हो जाएगा वो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट. और कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं चलता है कि यह काम शुरू हुआ है या समाप्त हुआ है. उस तरह को लेकर जब हम कंफ्यूज होते हैं तो उस तरह का सेंटेंस जब आपके सामने आएगा तो उस तरह के सेंटेंस को, उस तरह के वर्ब को लेकर हम लोग कहते हैं कि इंडेफिनिट है. दैट मीन्स इसको लेकर हम लोग श्योर नहीं है या काम होता है या नहीं होता है. इसके अलावा एक और ऐसा भी काम होता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है लेकिन फ्यूचर में वो कब हिंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है. इस तरह का सेंटेंस जो होता है तो पास्ट का टाइम उसके परफेक्टनेस को शो करता है. वर्क चूंकि कंटिन्यू है तो वो उसकी कंटिन्यूटी को शो करता है, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस. दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इस दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हर टेंस का काइंड्स ऐसे ही बनता है. प्रेजेंट के साथ ऐड करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वैसे पास्ट के साथ ऐड करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वैसे ही फ्यूचर के साथ अगर ऐड करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये आपका बनेगा. इसके बाद अब हम लोग वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे. As you see that the tense has been divided into three parts: past, present and future. First of all, we will see about the present tense. प्रेजेंट टेंस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है उसके हेल्पिंग वर्ब को देखा जाए. प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर डू या डज आपको दिखाई दे सेंटेंस में, हैज या हैव दिखाई दे, हैज या हैव दिखाई दे, इज, एम, आर दिखाई दे, तो इसको हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम लोग ये समझ जाएंगे कि यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट टेंस का है.
Okay, those sentences, those action comes under the present tense, that shows that the work is, that action shows to present time, is called present tense. And with the help of those helping verbs, we can identify in the English sentences that is comes under it or not. On the basis of action or nature, present tense also divided into four parts: present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. We will see the first of present tense, present indefinite. That means in present times, that action does not show it has been started or not, it would be completed or not. Such type of sentences comes under present indefinite. And in Hindi, when the sentence is ended by ता है, ते है, ती है, ते हो, are called present indefinite in Hindi. It is used to show the routine and habit also, and the structure of positive sentence is subject plus V1 या V5 plus object. Here we have two verb forms, V1 and V5. V1 plus S और ES is called V5. जब भी हम वर्ब में, वर्ब के रियल फॉर्म में एस या ES को ऐड करेंगे तो वो V5 बन जाएगा. और V5 का यूज कब करेंगे हम? तो V5 is used with third person singular number. V5 is used with third person singular number. Third person singular number such that he, she, it or any name. When the subject would be he, she, it or any name, then we will use V5. Otherwise, rest of the person, singular or plural, we will use V1. Like that, example, Ram reads English. Here, reads is V5 and Ram is third person singular number. So we use V5 with it. In the next example, I play football. Here I is first person singular number. So you use V1. Like that, a part of third person singular number, we will use V1, and when the subject will be third person singular number, we will use V5. V5. And in the second structure, the structure of negative sentence, here the structure of negative is subject plus do or does plus not plus V1 plus object. Here you will see the helping verb is do or does. The does is used with third person singular number. Like that, the first structure, when we add S or ES in the verb, it becomes V5, and V5 is used with third person singular number. Like that, ES is also added with do, it becomes does, and then we will use does with third person singular number. Like the example, you second person
we use with do, and third C, third person singular number, here we use does. In the next structure of interrogative sentence, do or does plus subject plus given plus object. In the same way, here subject is they, so we should use do, and the teacher third person singular number, so it is used does at here. In the next structure of interrogative negative sentence, not comes after subject, and structure is do or does plus subject plus not plus given plus object. Here we first person plural number, we use do. Your father is third person singular number, so we use does at here. Next structure of WH interrogative, yes no question, in yes no question, in reply question, WH word plus do or does plus subject plus given plus object. Here he is third person singular number, so you use does. You second person, so you use do at here. Like that we will see the next structure of WH interrogative negative. Like that, in the last structure of WH interrogative negative sentence, the structure is WH word plus do or does plus subject plus not plus given plus object. Here in example, here subject is you, second person, we use do. In the second example, subject is she, so we use at here does. Here your present indefinite is ended. And what is the use of present indefinite in our life? The first use is to write question answer in science subject for the students of school. And second use is to tell about yourself. And third use is to tell about habit or nature. And fourth use is to show universal truth. In all these things we use only present indefinite. That's it. Thank you.